Assalamu alaikum students. I hope you all are good and safe at home and enjoying your holidays. As we have completed our previously two topics, so today we will do our next topic, that is verb, page number 44 of your English grammar book. Topic name is verbs. And as we have completed our previous topic with the same lecture about verbs, but in this lecture we come to know more about verbs. Verbs are basically the words that show some action, and we have learned previously about auxiliary verbs, but in this lecture we will learn more about verbs. So let's start the reading. We use past tense of verbs to tell us about something that happened in the past. To do so, we add d or ed to the verb family name. For example, the children played, the women crossed the road. We use an auxiliary verb along with a verb ending with ing to show that an action was going on for some time. Okay, what they are trying to say, that basically in past tense we use ed with the verb that shows past tense, that shows past sentences, पास्ट टेंस, गुजरा हुआ ज़माना जो बता रहा होता है. एंड जब हम ई डी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, वर्ब लाइक प्ले इज़ द वर्ब, क्रॉस इज़ द वर्ब, एंड व्हेन वी विल ऐड ई डी विद दीज वर्ब्स, ये बन जाएगा प्लेड एंड क्रॉस्ड. नाउ द प्लेड एंड द वर्ड क्रॉस्ड, दीज वर्ड शोज़ द पास्ट टेंस, गुजरा हुआ ज़माना. ये वर्ड्स इन सेंटेंसेस में, ये जो वर्ड्स हैं यूजिंग ई डी शो कर रहे हैं कि ये टाइम गुजर चुका है. वी यूज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब अलॉन्ग विद द वर्ब एंडिंग आई एन जी डैट टू शो डैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. आई एन जी भी हम सम टाइम यूज़ करते हैं वर्ब्स के साथ, जो ये बता रहा होता है कि डैट एक्शन वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, लाइक द बॉयज़ वर क्लाइंबिंग द हिल. Okay, so these are basically these are also called the verbs, and basically these things they have add with the verbs to show that we can add ed with the verbs to use in past tenses. Okay, so there is some other example. Same page 44. We had finished reading the lesson before the teacher arrived. In this each sentence, two verbs are mentioned, and the first verb, that is had mentioned, it is earlier action, ये काम हो चुका है, and before the teacher arrived it also the verb, but ये verb जो है बाद में action show कर रहा है. बाद में पहले वाला काम है earlier action, had finished. एक सेंटेंस में दो वर्ब्स यूज़ हुए हुए हैं. पहला वाला वर्ब बता रहा है कि ये काम पहले हुआ हुआ है, और जो सेकंड वर्ब है वो शो कर रहा है कि ये काम उस काम के बाद हुआ हुआ है. सेम, बाय द टाइम वी रीच द शॉप इट हैड क्लोज्ड. सेम, विद इन अ सेंटेंस two verbs are used. One verb shows later action and the second verb shows the earlier action. Okay, इससे ये हमें पता चल रहा है कि in a single sentence we can add two verbs easily. So let's move towards the activity. The first is copy the following sentences in your notebook. Underline the past tense verbs in the each. Okay, simply underline the past tense. The first one is, the sailors had been sailing for almost a month. Had been, यूज़ ऑफ हैड जो है वो शो करता है पास्ट टेंस. सेम इसी तरह जैसे मैंने बताया, ये हैड जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है. जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ अगर हम ई डी लगाते हैं, तो कोई भी वर्ब है उसके साथ अगर हम ई डी लगाते हैं वो भी एक पास्ट टेंस शो होता है. और ये जो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी सेंटेंसेस में अगर यूज़ करते हैं, उससे भी हमें पास्ट टेंस का इजीली पता चल जाता है कि ये गुजरा हुआ ज़माना है. दीज आर द रिकग्निशन ऑफ पास्ट टेंस बेसिकली. द सेकंड इज़, द ओल्ड मैन हैड लिव्ड इन अ बिग
bungalow before he moved to the new flat. In this each sentence, एक sentence में दो verbs use हुए हुए हैं. The first one is had lived. Had lived. Live is a verb and ed इसके साथ add हुआ है, and that it shows past tense as we have discussed above that जब हम verb के साथ ed लगाते हैं, simple verb के साथ अगर हम ed लगाएंगे तो वो past tense को show करेगा. एंड दी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स यूज़ हुए हुए हैं. द सेकंड वर्ब इज़ मूव्ड. सिंपल मूव जो था, हरकत करना, डैट इज़ वर्ब. ईडी जब इसने इन्होंने लगाया तो इट शोज इट्स पास्ट टेंस. ओके, सो द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज शी हैड क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड. सेम इसमें भी हैड क्लीन्ड, ये भी पास्ट टेंस है. एंड द सेकंड इज़ अराइव्ड. सेम दो वर्ब्स इसमें भी यूज़ हुए हुए हैं, पास्ट टेंस यूज़ हुए हुए हैं. हैड क्लीन्ड एंड द सेकंड वन इज़ अराइव्ड. Fourth one is they were finding sums difficult. They were finding the sums difficult. इसमें were finding. This is the example of past tense. Okay. So next page, page number 45. Topic is same verbs. Verb. Part A. Copy these sentences in your notebook, filling the blanks with the past tense of an action that has happened before. अब इसमें वो action that has happened before. According to these statements, according to these sentences, we will add past tense. Okay. सो लेट्स रीड दी सेंटेंसेस, फिर हमें उससे पता चलेगा कि हमने कौन से वर्ड इसमें यूज़ करने हैं. द फर्स्ट वन इज़ आमना डैश हर डिनर व्हेन आई रीच्ड. अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उन्होंने कहा भी था कि डैट हैज़ हैपेंड बिफोर. ऐसे सेंटेंस इन्होंने यूज़ किए हैं जो कि पहले हो चुके हैं, और पहले हो चुके जो होते हैं डैट शोज़ पास्ट टेंस. और हमने यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जो है पास्ट टेंस ही यूज़ करना है. सो आमना हैड डन हर डिनर व्हेन आई रीच्ड. डन जो है डैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब that is used here. And the second one is the Khan family dash in Lahore for 20 years before they shifted to Quetta. The Khan family lived in Lahore. रहते थे लाहौर में for 20 years before they shifted to Quetta. Live simple verb है and ed हमने इसके साथ use किया. That is also shows the past tense. Okay. The third one is she dash not slept well last night, so she slept till late in the morning. The answer is had. She had not slept. She dash us detailed instructions the day before, but we forgot all about them. She gave us detailed instructions. Okay. उसने हमें दी. Gave. Gave is the example of past tense here. Complete this table part B. Complete this table below with verbs in their past forms. Okay, so now here in this column we have to complete the sentences with verbs but in their past forms. The first one is sleep. I slept. I was sleeping. Okay, this activity has already done, so write the sentences and where you feel any difficulty you can match your answers with this lecture. So next moves towards our next part C. Copy these sentences in your notebook. Complete each sentence with an ing verb in past tense. Okay, past tense with an ing verb in the past tense. Okay, in this question, two things are required that you have to do. The first one is addition of ing with the verb, and the second one is use of was and were. Okay, so the first statement is the crowd dash shout slogans against the rising prices of grains. Shout the verb इस यहाँ पे जो मेंशन हुआ है ब्रैकेट के अंदर. Shout the crowd dash shout slogans against the rising prices of grains. Okay, इसमें क्या करना है, आंसर इसमें होगा the crowd was shouting.
एज अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आईएनजी हमने ऐड करना है वर्ब के साथ, एंड वर्ब जो है ब्रैकेट्स में मेंशन है, शाउट के साथ शाउट एज इट इज़ राइट करना है, एडिशन ऑफ आईएनजी विद द शाउट एंड इट वुड बिकम शाउटिंग, एंड वॉज क्योंकि यहाँ पे वॉज ही यूज़ होगा, द क्राउड वॉज शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स. ओके, the second is the kittens dash sleep in a cozy corner in the bedroom. As kittens are plural, ये plural है, and we will use were with kittens, and sleep के साथ ing अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा the kittens were sleeping in a cozy corner in the bedroom. Okay, the third one is it was very late. Tina's parents dash worry about her. As Tina's parents are plural, so we will add were here, and if we add ing with the worry, so it would become worrying. Tina's parents were worrying about her. जैसे मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक यूज़ ऑफ वॉज एंड वर, एंड द सेकेंड वन इज़ एडिशन ऑफ ing with the verb, and verbs are mentioned in the bracket. So the next one is the Australian team dash scored very well in the first few overs. Australian team were scoring. स्कोरिंग वहीं से ब्रैकेट से उठाया एंड बनेगा इसका आंसर, दिस ऑस्ट्रेलियन टीम वर स्कोरिंग वेरी वेल इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स. ओके, सो पेज नंबर नेक्स्ट 46 page number, and the last question of this topic is copy the following sentences in your notebook, fill in the blanks with suitable verbs from the brackets. Okay, now what will you do? Read this passage carefully and write this passage as it is in your rough notebooks and do this activity, and if you face any problem you can easily copy your you can tally your answers here, as answers are already written here, mentioned here. So that's all, we have completed our third topic. So good luck and thank you.